Hi, good morning everyone. Welcome to a new exercise of extra practice of chapter 8. In this question 1, you have to identify the like terms. You have number of terms is given to you. Whatever like term, same variable term is there, you just pick up and write it there. Next, identify terms and factor in the expression given below. So here there are 4 questions are there. In the first question, first you have to count the number of terms. So there are 2 terms, minus 4x minus 5, and you have to separate each other for the factors. The factor will be minus 4 comma x comma 5. You have to write each term with the comma sign in the form of factor. So here next b term is again 2 terms, minus 4x plus 5y, and your factors will be minus 4 comma x comma 5 comma y. Similarly, you have to do these two also. In third question, you have to just write the numerical coefficient of the term. Numerical coefficient means you no need to write the constant term, only that numerical number multiply with the variable. Here only minus 3, here 1 1 1, here is 1 2 3, and here is minus 1 and 7. So these are numerical coefficient. In question 4, you have to identify whether terms are monomial, whether expression is monomial, binomial and trinomial. In your question 5, you have to add the terms. Your first question is 5a square plus 2 plus 9ab minus 2. So in this you have to first open the bracket, because positive sign is that, so no, there will be no change in the sign. So that will be 5a square plus 2 plus 9ab minus 2. Only plus 2 and minus 2. Same term with opposite sign cancel with each other. No like term is further. So my answer will be as it is, like 5a square plus 9ab. Similarly, in B, 2qp minus 3qr plus 9rq minus 7rp plus pr minus 5pq. First you open the bracket, because all positive sign is between that, no need to change the sign. After that you arrange the like term like x square, y square. Okay, next term is one by one. When you arrange the term, here in this order doesn't matter. If you write qp and pq, that is the same thing. qr and rq, that is the same thing, because same variable with same power is there. Doesn't matter whether they are writing in first position or second position. Here also rp, we arrange the like terms, minus 3pq, 6qr minus 6pr. Similarly in C also, when you open the bracket, arrange the term 4x square y square plus 3x square y square minus 3xy minus 11xy plus 16 plus 8. 4 plus 3, 7x square y square minus 14xy plus 24. That is my required answer. Now D part is, you have 12x square minus 25x minus 9 plus 6x square plus 13x plus 34 minus 8x square. Just pick the like terms from each bracket. 12x square minus 8x square, then plus 6x square, then 5 further minus 25x plus 13x minus 9 plus 34. Now you add this one, 12 plus 6, 18 minus 8, give me 10x square, minus 25 plus 13 minus 12x, then plus 25. Similarly 6th question, E part, when you just open the bracket, because outside the bracket there is a negative sign. Okay, if there is a negative sign, when you open the bracket, all sign will be changed. That is present within the bracket. Terms present within the bracket, sign will be changed. If it is positive, changes to negative, and negative changes to positive. Here after that, when you check that is there any like term is there, only this like term, minus 2l m square n minus 2l m square n, only this is the like term. Others are unlike term. We as it is written in our answer, only we just add this one, minus 2 give me minus 4, and other terms no like term is there, we have to write as it is. Similarly in your B part of this question, question number 6, minus 11x cube plus 2x minus 15 minus 9x square plus 2x square minus 2x. Then when you open the bracket,
sign will be changed. First you open the bracket by changing the sign, because outside the bracket there is a negative sign. After that you arrange the like term, minus 11x cube minus 9x cube, then minus 2x square, no like term is there, you write as it is, 2x and 2x minus 15. After calculation you get minus 20x cube minus 2x square plus 4x minus 15. Similarly in C part also, so there are 3 terms are there, so 3 expressions are there within the bracket, 35pq minus 8rq plus 7pq square minus 4qpq minus 2pq plus 17pq square minus 3qr minus 5p4 minus 10rp plus pq square. First you open the bracket by changing the sign, because negative sign is outside. When you open all the brackets, after that you have to arrange the like terms. Like first I find the like term pq square. So there are 3 terms of pq square, 7pq square minus 17pq square minus pq square, and 2 terms of pq, 35pq plus 2pq, and 2 terms of rq also, minus 8rq minus 3rq. Other 3 terms are left, so there is no like term for that. Now you just add the like term. 7 minus 17 minus p give me minus 11pq square, 35 plus 2 37pq, minus 8 minus 3 minus 11 rq minus 4q pq plus 5p4 plus 10 rp. That is written as it is. Now in your 7th question you have to multiply one polynomial with the another polynomial. So if I multiply 15x square minus 5x minus 10 with another polynomial 4x minus 5y, first term you have to pick from that, multiply with the whole bracket. Then second term with sign also, minus 5x multiply with 4x minus 5y, then minus 10 also 4x minus 5y. Now one by one, which term is available outside the bracket, all the terms multiply with that term. Like 15 into 4 60, and when you multiply x with x, only power will be added. 2 plus 1 give me 3. Similarly 15 into minus 5 minus 75x square y. Similarly other terms also. So you can do one thing, either you directly multiply negative with positive sign, no need to change the sign after that, or first you multiply term only within the bracket and later you can change the sign. Like first 5x goes inside to multiply all the terms, 20x square minus 25x xy. Similarly 10 goes inside, 40x minus 50y. But when you open the bracket, this is minus 20x square plus 25xy minus 40x plus 50y. Sign will be changed and no like term is there, so that is your required answer. Same in case of B also. Okay, so only one term is like term when you multiply one by one. First 2q multiply with this whole bracket, minus 4p4 multiply with this whole bracket, minus 10pq multiply with this whole bracket, then plus pq square multiply with 2pq plus 4pq square. So one by one when you multiply, here I directly multiply and open the bracket here. Like here 2q, when multiply with first bracket 4pq square plus 8pq3. Now I also multiply with negative sign, so no need to open later. So I can directly here minus 4p4 multiply by plus 2, that give me minus 8p5q minus 16p5q square minus 20p square q square minus 40p square qq plus 2p square qq plus 4p square q4. After that you search for the like term. Only these two terms are like term, I just add it. That is minus 40 plus 2 gives me minus 38p square qq, and other terms are all unlike terms, we write as it is in our answer. Similarly here in also in C question also, when you multiply one by one, first term with whole bracket, second whole bracket, and second term also with whole bracket. So when you open, so there is no like term is left. All terms are unlike, all 4 terms will be unlike, so that is your required answer. Here also you just one by one multiply, and after that when you multiply all the terms you find that there is no like terms and your answer will be as it is. Similarly in D also,
there is also no like term when you open, like x4/7 multiply this whole bracket, then 7/4 x6y multiply this whole bracket. When 1/1 you multiply, numerical part will be multiplied with numerical part and variable will be adjust with the variable, only power will be added in same variables. So here when we get the answer, so here we found that no like term is available. So my answer will be as it is, 2/21 x7 minus x6 y square by 7 plus 7/4 x8 y, and here it is cancellation is there, 7/6 x9 y square minus 7/4 x8 y cube. Now in your question 8 you have to find the quotient, you have to divide the term. अगर आपके पास डिवीज़न में सिंगल मोनोमियल है तो आप डायरेक्टली हर एक टर्म को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डिवाइड कर सकते हो. तो अगर आपके पास ऊपर भी सिंगल टर्म है, जैसे 12a4b स्क्वायर था, तो 12a4b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर, तो 12 तो एज इट इज़ ही रहेगा, सिर्फ नीचे जो a स्क्वायर है उसकी पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल. 4 - 2 गिव मी स्क्वायर, तो 12a स्क्वायर b स्क्वायर इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर. बट अगर आपकी 2 टर्म्स आ जाती हैं, नीचे डिवीज़न में मोनोमियल टर्म आती है, तो मोनोमियल टर्म का मतलब है कि ये मेरा कॉमन डिनोमिनेटर है ऊपर वाली दोनों टर्म का. पहले तो मुझे इस डिनोमिनेटर को सेपरेट करना है. 42x स्क्वायर y स्क्वायर 7xy comes downward here also. 8x minus a minus will be in between the two terms. 8xy divided by 7xy. Now here 7 6 are 42. x2 minus 1 y2 minus 1, here 8/7 x1 minus 1 y1 minus 1, so that gives me 6xy minus 8/7, because 1 minus 1 is 0 or any term has power 0, that equal to 1. Similarly in C also, now here 3 terms are there and common denominator is there, minus 5a square b c square. So what you will do, first you separate this denominator with all the different terms, like first term 5a square bc square divided by minus 5a square bc square minus 15 a cube b square c square minus 5a square bc square minus 25a7 bc square minus 5a square b c square. Here नेगेटिव साइन ऑल्सो डाउनवर्ड, ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. 5 3s are 15, 5 5s are 25, that becomes also positive, and here positive is there, and when positive multiply with negative, that changes to negative. So 5 will be cancelled with each other. a 2 minus 2, b 1 minus 1, c 2 minus 2 according to exponent rule. Here also 3a 3 minus 2, b 2 minus 1, c 2 minus 2, 5a 7 minus 2, b 1 minus 1, c 2 minus 2. Here all terms get power 0 in first term, so 1 is only left, minus 1. Here 3ab, because c power is 0, that is 1. Here bc power is 0, that becomes 1. 7 minus 2 give me 5, 5a raised to power 5. In D part, now here what happen when polynomial divide by another polynomial. So अगर आपके पास एक्स क्यू माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 1 42x माइनस 120 है, इसको आपने x माइनस 10 के साथ डिवाइड करना है. जब आप डिवाइड करोगे तो पहला टारगेट आपका यही है कि आपने पहले डिविडेंड को चेक करना है कि क्या आपका डिविडेंड x की डिसेंडिंग पावर में है, हायर पावर, लोअर पावर एंड लास्ट कांस्टेंट टर्म. और आपका डिवाइज़र भी इसी फॉर्म में होना चाहिए कि सबसे पहले वेरिएबल की हायर पावर, देन लोअर पावर, वेरिएबल देन कांस्टेंट. अब फर्स्ट टारगेट आपको एक्स क्यूब चाहिए, सेम एक्स क्यूब चाहिए, तो ऑलरेडी एक एक्स है, हमें एक 2 मोर एक्स चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, एक्स स्क्वायर के साथ. जब एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब आ गया. अब रेस्ट ऑफ द जो डिवाइज़र में टर्म है वो भी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगी, दैट इज़ माइनस 10 एक्स स्क्वायर. लाइक टर्म के नीचे ही आपको अरेंज करना है, साइन चेंज हो जाएंगे डाउनवर्ड क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. और माइनस 23 प्लस 10 गिव्स मी माइनस 13. ये वाला साइन आपको इंक्लूड नहीं करना क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन में डाउन सेकेंड वाला एक्सप्रेशन का साइन चेंज हो जाता है और चेंज वाले साइन ही एक्सेप्ट होते हैं, ये वाले एक्सेप्ट नहीं होंगे क्योंकि साइन चेंज हो गए आपके. नेक्स्ट इज माइनस 13x स्क्वायर प्लस 142x. नाउ नेक्स्ट टारगेट इज रिमूव माइनस 13x स्क्वायर. ओनली सिंगल x है, मुझे माइनस 13 भी चाहिए और एक और x चाहिए, तो माइनस 13x से मल्टीप्लाई करेंगे
minus 13x square and minus 10 into minus 13 plus 130x. And ये जो आपका नंबर आया that you have to also write in the quotient. So that will be cancelled. 142 minus 130 give me 12x, minus 120 carry downward. Next is next target is 12x. Now x will be multiplied by 12, give me 12x, and 12 also multiply minus 10, give me minus 120, remainder is 0, and my quotient is x square minus 13x plus 12. Next is ninth question. You have to just simplify the terms. In simplify the terms, if any term outside the bracket, you multiply that term with all the term present within the bracket, or if any negative sign outside the bracket, you just open it one by one by changing the sign within the bracket if negative sign. नाइन्थ क्वेश्चन ए पार्ट में आपका ऑलरेडी 3xy था, 2xy माइनस वाई स्क्र प्लस माइनस 2yz yz माइनस zx प्लस 3yz माइनस 3yx माइनस z माइनस x. तो वन बाय वन आपने 3xy को पहले नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन में 3xy को पहले 2xy फिर माइनस वाई स्क्वायर के साथ वन बाय वन आप मल्टीप्लाई करोगे, देन माइनस 2yz को yz के साथ पहले मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 2yxyz स्क्वायर. इसी तरह से प्लस 3yx को z माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो आपका आ जाएगा प्लस 3xyz देन माइनस yx माइनस 3yx स्क्वायर. सो व्हेन यू ओपन नो लाइक टर्म इज देयर, then you have to write the answer as it is. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका बी पार्ट में भी इसी तरह से है आपका 5a प्लस बी 3a माइनस 2b प्लस 5 माइनस 4a a माइनस 4b प्लस 8. पहले आपने 5 को a प्लस b के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 3a माइनस 2b प्लस 5 जो 5a को फिर इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर 5b को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, देन माइनस 4a को भी इस वाली पूरी ब्रैकेट के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है. तो साथ में आ जाएगा माइनस 4a स्क्वायर प्लस 16ab माइनस 32a, और 5a को जब इस पूरी ब्रैकेट के साथ किया 15a स्क्वायर माइनस 10ab प्लस 25a, देन 15ab माइनस 10b स्क्वायर प्लस 25b. अब जहाँ जहाँ पे आपकी a स्क्वायर की टर्म है, a स्क्वायर देन माइनस 4a स्क्वायर अरेंज कर ली, देन ए बी की 3 टर्म्स है माइनस 10ab प्लस 15ab प्लस 16ab, तो ये आपकी तीनों अरेंज होगी. फिर नेक्स्ट ए की 2 टर्म्स है 25a माइनस 32a, अदर 2 टर्म्स लेफ्ट एज इट इज़, नो लाइक टर्म अवेलेबल, वी राइट एज इट इज़ इन द आंसर. 15 माइनस 4 11a स्क्वायर माइनस 10 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 21ab, 25 माइनस 32 माइनस 7a एंड माइनस 10b स्क्वायर प्लस 25b इज माई required answer. Now your C part is 9x square minus 6xy minus 12x square y plus 2xy minus 3x square y. वन बाय वन पहले आपने ये राउंड ब्रैकेट ओपन करनी है, 2 को दोनों ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, अरेंज की लाइक टर्म्स को, तो ये आ गया 8xy माइनस 18x square y. नेगेटिव साइन इज आउटसाइड, व्हेन यू ओपन साइन विल बी चेंज्ड. नाउ अरेंज, check again for the like term, 9x square y plus 18x square y gives me 27x square y minus 8xy. Similarly 2xy plus 7 by x, अब 7 by x को 2xy तो एज इट इज़ ही रहेगी, सिर्फ 7 by x को आपने एक एक करके अंदर की सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है. पर मल्टीप्लाई करने से पहले ये राउंड ब्रैकेट ओपन करके साइन चेंज करने हैं, चेक करना है लाइक टर्म्स तो नहीं है, देन यू हैव टू ओपन द आउट स्क्वायर ब्रैकेट, मल्टीप्लाई 7 बाई एक्स को मल्टीप्लाई 7 बाई ईच एंड एवरी टर्म प्रेजेंट विद इन द ब्रैकेट. आपके ब्रैकेट में जो 4 टर्म्स है हर एक के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है वन बाय वन. न्यूमेरिकल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल आपके एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग टू अरेंज होंगे. सो माई रिक्वायर्ड आंसर विल बी 2xy प्लस 7x स्क्वायर 7xy माइनस 14y एंड माइनस 28y(x). आपका लास्ट क्वेश्चन था कि अगर एक ट्राइंगल की 3 साइड्स आपको दिए तो पैरामीटर निकालना है. पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल तो यही होता है कि तीनों साइड को आपस में प्लस करना है. Add all 3 sides which are given to you. Arrange the like term s plus 2s 5t minus 4t minus 2 minus 8 plus 5. 1 1
or 2 gives me 4s, 5 minus 4, 1t, and minus 10 plus 5 give me minus 5. Thank you. Have a nice